overpopulation. So going into the population or population studies, we need to understand some points about the population actually. I think third year में या fourth year जो first semester में मुझे जैसा याद है तो we have discussed few points about the population. Okay, so we have to understand first of all the uh, numerical behavior of populations. Okay, numerical behavior of populations, and this can be happen only through the a science we call it as a demography. Okay, demography, and the people who are managing this science or practicing this science are called as demographers. Okay. Last time I think in third year we discussed all these points. Sorry, in first semester of ecology, but that was not confronting to the human population only, because we discussed over there a lot of things about the population, and that was mostly about the plant population or the ecological systems of population. So we have certain points to be understand, uh, particularly for this population or population change, because this is one of the biggest environmental problem, particularly we are facing nowadays, or the earth is facing nowadays, or the world is facing nowadays. So this biggest problem is population growth or population change, or what we call as the overpopulation. Okay, if you are going to study the population, or if you are counting the people or number of, simply we can say that the population is nothing, it's a number of individuals of same, what we call same species uh, living in a particular space. Okay, that can be a space, that can be a population, but when we are discussing about the population, it should be under certain boundaries. Okay, okay, when we are defining the population boundaries, okay, then this population becomes more uh, what we call the more reliable as well as more effective definition of population change can be there. Okay, that is only because of the, if we are generally confining the population within the boundaries. So when you are considering the number of individuals of same species living in a species, or number of individuals of same species, if you are considering this thing, it can be a population. Definitely it's a population, means there is a number of individuals, and that's a numeric value. ठीक है, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है. न्यूमेरिक वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो नंबर आपको, एक वैल्यू जो है वो आपको मिलता है, तो दैट्स अ पॉपुलेशन. बट व्हेन वी आर डिस्कसिंग, okay, if I'm going to give you an example, say suppose we have uh, ठीक है जी, if we are considering, say suppose we have 1000 people living in a village consisting 100 households. Households का मतलब होता है यानी घर. ठीक है, if they are, but consider, okay, this is a population of one village, 1000 people living there. Okay. लेकिन अगर हम इसमें हाउसहोल्ड्स की तादाद को कम कर दें, ठीक है, लिविंग 1000 people living uh, living in, say suppose 20 households, although it's very difficult. Okay, so if they are living in 20 households, what happens? Definitely the number of individuals in a single boundary, okay, one boundary, because this these 100 households are defining some sort of boundary actually.
यानी वो एरिया जहाँ पे 1,000 पीपल या 1,000 लोग जो है वो रह रहे हैं। इसी तरीके से जो 20 घर हैं वो भी वो एरिया डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे 1,000 पीपल, तो डेफिनेटली देयर विल बी ओके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इज सेम। आप देख सकते हैं कि दोनों किस्म की कंडीशन में जो है नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज सेम, बट व्हाट इज द चेंज ओवर हेयर? चेंज क्या चीज है? चेंज ये है कि हाउस होल्ड्स जो है यानी बाउंड्री जो है वो नेरो है। देयर इज अ नेरो बाउंड्री एक्चुअली इन दीज टू एग्जांपल्स। इन फर्स्ट एग्जांपल 100 हाउस होल्ड्स यानी 100 घर में, इसके मतलब अगर हम देखें तो एवरेज 10 पीपल आर लिविंग इन इन वन होम। बट अगर आप उसको 20 हाउस होल्ड्स पे लेके जाते हैं तो आपको नजर आता है कि एवरेज 40 पीपल या 50 पीपल जो है वो एक घर में रह रहे हैं। सो इट्स सम सॉर्ट ऑफ व्हाट वी कॉल द कंजेशन। ओके, दिस इज कॉल्ड द कंजेस्टेड पॉपुलेशन। ठीक है ना? पॉपुलेशन, if if we are considering this congested, okay, if the population is congested, definitely this situation is termed as the population density. And population density is very much important in the sense कि कई एक दुनिया के शहर हैं, सिटीज हैं, मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं, दे आर वेरी मच कंजेस्टेड। ठीक है, कुछ कंजेस्टेड इस हिसाब से होते हैं कि डेंसिटी जो होती है वो एक्चुअली इसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो होते हैं दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बल्कि डायरेक्टली दे आर डिपेंडेंट, डिपेंड्स on what the area of residence, ठीक है ना, एरिया ऑफ रेजिडेंस उस पे डिपेंड करते हैं डायरेक्टली। तो डेंसिटी जो होती है उसका मतलब ये होता है कि नम आपके पास बाउंड्रीज कितनी है। ठीक है, इफ यू हैव लार्जर एरिया एंड लोअर पीपल इट मींस योर पॉपुलेशन इज थिनली पॉपुलेटेड। ठीक है, तो लेकिन कंजेस्शन तब होती है जब आपकी पॉपुलेशन थिक होती है, यानी डेंस पॉपुलेशंस जब डेवलप होती हैं तो उस सिचुएशन में आपकी जो पॉपुलेशन, अच्छा डेंसिटी जो होती है इट अगेन affects it affects the living system or living standards of any society। ठीक है, कोई किसी भी सोसाइटी के लिविंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उसको डेंसिटी अफेक्ट करती है मोस्टली। डेंसिटी अफेक्ट्स द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ एनी सोसाइटी, नंबर वन। ठीक है, डेंसिटी अफेक्ट्स the needs as well as बेसिक नीड्स। ठीक है, जो बेसिक नीड्स होती हैं उसके अलावा जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं लाइफ की उन तमाम, एज वेल एज रिक्वायरमेंट्स ऑफ लिविंग। ठीक है, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो होती हैं वो डेंसिटी से अफेक्ट होती है। तो जब हम इस तमाम चीज़ों की बातचीत करते हैं तो इसमें एक एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ द पॉपुलेशन इज गोइंग टू बी डेंस। ठीक है, पॉपुलेशन की डेंसिटी जो है हाउ इट इज गोइंग टू इनहांस और इंक्रीज। दो किस्म की चीजें होती हैं जो जिसको हम कहते हैं पॉपुलेशन चेंज एज वेल। ठीक है, पॉपुलेशन चेंज इज कैन बी कॉज बाय टू फैक्टर्स, लेकिन सबसे जो पहला फैक्टर होता है इनफैक्ट वो हम इसमें लेते हैं तो या तो होती हैं बर्थ्स, ठीक है, एंड डेथ्स। तो बर्थ्स एंड डेथ्स बिकॉज दीज आर एक्चुअली द नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, इसको हम नेचुरल फिनोमेना कहते हैं। और इस नेचुरल फिनोमेना के अंदर क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग, डेफिनेटली दिस नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड एज आइदर नेचुरल इंक्रीज or what we call the natural change। Change in population। ठीक है, नेचुरल चेंज इन पॉपुलेशन। अच्छा, ये जो नेचुरल चेंज है ये नेचुरल इवेंट्स के जरिए वजूद में आ रही है। नेचुरल इवेंट्स कौन से हैं? देयर इज अ बर्थ एंड डेथ। सो पॉपुलेशन ग्रोथ
can be measured in terms of births and deaths. So in this situation, growth or growth rate, which is generally denoted by r, small r से हम उसको जाहिर करते हैं, उसमें सिंपल इक्वेशन होती है, यानी births माइनस deaths, ठीक है, इस तरीके से births माइनस deaths. सो फॉर एग्जांपल लेट सपोज, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक 10,000 10,000 इंडिविजुअल्स की एक पॉपुलेशन है, या कोई विलेज है, या कोई छोटा सा टाउन है जिसमें 10,000 लोग रह रहे हैं. इस 10,000 में पर ईयर 200 पीपल जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, आर गेटिंग बस, ठीक है, गेटिंग बस 200 पीपल. अच्छा, और इसी पॉपुलेशन के अंदर 100 पीपल आर गोइंग टू आर डाइंग पर ईयर, ठीक है. तो फिर हम इसको सिचुएशन को किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं. टोटल पॉपुलेशन हमारे पास है 10,000, उसके अंदर पर ईयर 200 बर्थ्स हो रही हैं, 200 बर्थ्स यानी नए बच्चे पैदा हो रहे हैं 200, और उसमें से निकल कितने रहे हैं 100 पीपल. सो इफ वी कन्वीनियंट के हिसाब से अगर हम देखें तो ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि अगर आप एज फॉर एग्जांपल एज कन्वीनियंस का मतलब है कि आसानी की खातिर अगर आप देखें तो तकरीबन 20 पीपल दे आर डाइंग पर 1,000 पीपल, दे आर गोइंग टू बॉर्न पर 1,000. एक्चुअली मैं अपने गांव में हूँ इस वक्त, आई एम इन विलेज, बिकॉज ऑफ दैट आई एम facing certain problems of the internet. Okay, so we were discussing about an example of population growth. So if we have 1,000 10,000 in a 10,000 people population of 10, 20 are births, 200 are births and 100 are deaths. तो इसको हम अगर कन्वीनियंटली लिखें यानी आसान करके लिखें तो 20 बर्थ्स पर 1,000 पीपल, तो इसको हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे 20 बर्थ्स, और उसको हम, ठीक है, 20 बर्थ्स 20 बाय, तो उसमें से हम माइनस करेंगे 10, बिकॉज 100 डेट्स, इसका मतलब है कि 10 डेट्स पर 1,000 पर्सन्स, और 1,000 को एक और नेम भी दिया जाता है जिसको हम, क्योंकि हम हर पॉपुलेशन को मोस्टली सैंपल साइज के तौर पे 1,000 पीपल या 1,000 इंडिविजुअल्स के सो, और उसको इक्वल समझा जाता है, और उस टर्म को नाम दिया जाता है कोहॉर्ट का. सो इफ यू आर कैलकुलेटिंग दिस थिंग फॉर एग्जांपल, ठीक है, 20 divided by 1,000 is 20 divided by 1,000, it's uh, almost 0.02 minus 10 divided by 1,000. So it's going to be a 0.01. Okay, so it is going to be an example. Okay, uh, 0.02 minus 0.01. Okay, it's going to be a 0.01%. ठीक है, ये 0.01 इज अ ग्रोथ रेट जिसको कि हम शो करते हैं आर के थ्रू, ठीक है, लेकिन ह्यूमन पॉपुलेशन इज इक्वल टू 0.01%, ठीक है. तो इस हिसाब से इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि मेयरली एक ह्यूमन पॉपुलेशन में कोई एक खास, सिर्फ क्योंकि ये एक, इसको क्या कहा जाता है, मैंने आपको जैसे बताया, दिस इज अ नेचुरल इंक्रीज इन एनी पॉपुलेशन, ठीक है, नेचुरल इंक्रीज, बिकॉज व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग दीज थिंग्स, यानी बर्थ्स और डेथ्स, ये सारी चीजें जो कि नेचुरल है, इसलिए इसको नेचुरल इंक्रीज कहा जाता है. अच्छा, सो इफ
the birds or larger than deaths. ठीक है, तो इस सिचुएशन में व्हाट हैपेंस, द वैल्यू विल बी, यानी आर विल बी, जो ग्रोथ रेट है पॉजिटिव होगा. ठीक है, बट इफ द बर्ड्स और लेस देन द deaths, then what will be the value, will be value of or will be in negative. ठीक है, और जब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आता है, नॉर्मली तमाम स्पीशीज की अगर बात करें, तो अगर पॉजिटिव वैल्यू है, इफ द वैल्यू इज पॉजिटिव, ठीक है, इफ वैल्यू जो पॉजिटिव है, देन इक्वल पॉपुलेशन विल इंक्रीज. ठीक है, लेकिन अगर वैल्यू जो है, वैल्यू अगर नेगेटिव है, तो पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज होगी. ठीक है, इफ पॉपुलेशन इज गोइंग टू डिक्रीज, तो इट विल, और अगर उसमें यही ट्रेंड जो है वो नजर आ रहा है, तो ये पॉपुलेशंस एक्सटेंशंस की तरफ जाती हैं, जो कि आपने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में पढ़ा होगा, आई थिंक सो. ठीक है, वैल्यू नेगेटिव इज इक्वल डिक्रीज, और एक्सटेंशंस जो है इसमें शो होती हैं, यानी स्पीशीज जो है वो गायब होना शुरू हो जाती है. अच्छा, अब ये जो इंक्रीज है या ग्रोथ है पॉपुलेशन की, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स. ये दो किस्म की ग्रोथ होती है. एक को कहते हैं हम इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ. ठीक है, जो कि नेचुरल रेट होता है. लेकिन इससे पहले हम एक और चीज को की बात करें. ठीक है, हम इसको पीछे रखते हैं, पहले इससे पहले हम एक और चीज की बात करते हैं. शायद हमने पहले भी इस चीज के ऊपर बात की थी. बिकॉज ह्यूमन पॉपुलेशन, इवन स्पीशीज पॉपुलेशन, ओनली डज नॉट चेंज थ्रू द नेचुरल फिनोमेना, या नेचुरल ग्रोथ के जरिए वो सिर्फ चेंज नहीं होते, बल्कि उसमें कुछ सोशल और सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक या इस किस्म की वैल्यूज, और इसके जरिए से पॉपुलेशंस जो होती हैं वो उनमें एक मैकेनिज्म पैदा होता है जिसको हम कहते हैं डिस्पर्शन. डिस्पर्शन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है, मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम वन रीजन टू अदर. ठीक है, वन रीजन से अदर रीजन की तरफ उसकी मूवमेंट होती है. इफ दिस मूवमेंट इज इनवर्ड्स, ठीक है, दो किस्म की मूवमेंट्स होती हैं, वी ऑलरेडी नो. वन इज द इमिग्रेशन, which is denoted by small I, and other one is migration, which is denoted by small e. Okay, so immigration is in other words, it can be said that it's an inward movement, यानी पॉपुलेशन के अंदर दाखिल होना, और ये है ई फॉर एग्जिट, यानी एग्जिट मीन्स आउटवर्ड मूवमेंट. ठीक है जी, outward movement from any population. So both these movements are generally known as what we call simply the migrations. ठीक है, इसको migrations के साथ कहा जाता है. तो इस तरीके से अगर हम इस चीज को ग्रोथ में कंसिडर करते हैं या पॉपुलेशन चेंज में कंसिडर करते हैं, तो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग सम न्यू इक्वेशन. इट मींस और इज इक्वल टू, एक तो हो गया हमारा नेचुरल यानी बर्ड्स माइनस डेज. ठीक है, और उसके बाद इसके साथ हम और कौन सी चीज ऐड करेंगे, इसमें होगा इमिग्रेशंस आई माइनस ई, यानी हाउ मच इंडिविजुअल्स दे आर एंटरिंग इन द पॉपुलेशन आइदर थ्रू बर्ड्स or through immigration, and how much individuals are leaving this population either through death or थ्रू इमाइग्रेशन. ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो ग्रोथ होगा या पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होगा, अल्टीमेटली इट विल गो ऑन दिस वे. ठीक है, उसको कैलकुलेट करने का ये एक तरीका होगा. अच्छा, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ रेट्स.
तो ग्रोथ रेट जो है वो किस तरीके से जो है वो इनहांस होते हैं या उसमें कौन सी इंक्रीज होती है। एक तरीका होता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ। इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। और दूसरी होती है एक्सपोनेंशियल रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, इसको हम सिंपली इस तरीके से समझ सकते हैं। शायद फर्स्ट चैप्टर में हमने इसके ऊपर बात भी की थी, पहले चैप्टर में, पॉपुलेशन और पॉपुलेशन के हिसाब किताब में। ठीक है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ इज एक्चुअली द नेचुरल ग्रोथ। नेचुरल ग्रोथ which only depends on births minus deaths। ठीक है, अच्छा, डिफरेंट स्पीशीज जो होती हैं उसमें अगर हम इकोलॉजी की बात करें तो डिफरेंट स्पीशीज जो होती हैं उनका लाइफ स्पेन डिफरेंट होता है। ठीक है, नंबर एक। दूसरी बात ये होती है कि डिफरेंट स्पीशीज में बर्थ रेट्स डिफरेंट होते हैं और डेथ रेट्स भी डिफरेंट होते हैं। सर्वाइवल रेट्स भी डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि जो लार्जर एनिमल्स होते हैं जैसे ब्लू व्हेल है या एलिफेंट्स हैं या गिराफे हैं या इवन कैमल्स हैं, दे हैव उनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव रेट है वो बहुत स्लो होता है। स्लो का मतलब ये है कि वो दो दो साल के बाद, 3 साल के बाद बच्चा जो है वो पैदा करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उनमें स्लो बर्थ रेट जो है वो होता है। इसी तरीके से काफी एक पॉपुलेशंस ऐसी हैं जो कि एज स्पेसिफिक, जिनमें रिप्रोडक्टिव रेट जो होता है वो एज स्पेसिफिक होता है। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन इन आवर लास्ट, जो लास्ट हमने आई थिंक पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर में जो इकोलॉजी पढ़ी थी उसमें इस चीज में, तो इसमें एज एक फैक्टर होता है। बिकॉज रिप्रोडक्शन इज एज स्पेसिफिक, और एज स्पेसिफिक में मैंने आपको बताया था प्री रिप्रोडक्टिव एज होती है, रिप्रोडक्टिव एज होती है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज होती है। 3 स्टेजेस होती हैं एज की। ठीक है, इसी तरीके से साइज ऑफ इंडिविजुअल जो होता है वो भी इसमें मैटर करता है। ठीक है, साइज ऑफ इंडिविजुअल इज आल्सो गोइंग टू मैटर इन दिस मैटर मैनर।